हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास 12 का फ्लैमिंगो और विस्तास का जो जो चैप्टर्स है नेक्स्ट वीडियो में सब भी समझाएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं द लास्ट लेसन, जो कि आपका 12 का सिलेबस है। तो आप तो जानते ही हैं क्योंकि सीबीएसई ने अब सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। तो उसमें से ये है द लास्ट लेसन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड for next video, and if you have any doubt, please comment us and I will clear all your doubts. And if you like this video, please like, share and subscribe for upcoming videos. So let's start our videos. I started for school very late. ये लिखा है Alphonse Daudet. I started for the school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. इसका क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि पोएट बोल रहा है कि स्टार्ट किया था वो स्कूल में पहुंचने में देर हो गई थी और वो वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ, ग्रेट का मतलब है फियर ऑफ स्कोल्डिंग, बिकॉज एम हैमिल उनका टीचर थे जो येस्टरडे में बोले थे तो पार्टिसिपल का रिवीजन टेस्ट होगा, तो एक भी वर्ड नहीं जानते थे. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर creeping at the edge of woods and in open field back of sawmill the Prussian soldiers were drilling. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो पोइट जो है ना वो नेचर से प्लेजर लेते, नेचर से खूब प्यार है उसको, नेचर उसको अच्छा लगता है. तो ये बोल रहे मैं स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. सॉ मिल का मतलब क्या है? कटिंग द वुड वेर द प्रुशियन सोल्जर वेर ड्रिलिंग. प्रुशियन एंड फ्रांस के बीच में एक वार था. ये उस टाइम का स्टोरी है. प्रुशिया का जो ये ओल्ड नेम है, आज का जो नाम है जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी का वार था उस टाइम का, ये स्टोरी लिखा गया था. It was all much more tempting than rule for participle, but I had strength to resist, hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. Bulletin board का क्या मतलब है? Notice board. For last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battle, draft and orders of commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो वो बोल रहे जब वो टाउन हॉल से पास किया था तो इन फ्रंट में बुलेटिन बोर्ड देखे थे, नोटिस बोर्ड पे उस नोटिस बोर्ड से वो क्या न्यूज़ पाए थे, जो लॉस्टिंग बैटल्स है, ड्राफ्ट है, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर. तो आप पोइट सोच रहे क्या हो सकता है आज का मैटर, क्या हो सकता है आज का न्यूज़. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." तो जब भी वो फास्ट दौड़ के वो जा रहे थे तो उस दिन वो ब्लैकस्मिथ से मिले. तो ब्लैकस्मिथ एक वॉचर है, तो वो बोल रहे कि डोंट गो सो फास्ट बॉब, you will go to school in time. I thought he was making fun with me and reached M. Hamel's little garden all over out of breath. Usually when school began there was a great bustle, which could be heard out in street, the opening, closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, over hands, over our ear to understand better, and teaching great ruler rapping on table, but now it was also still. तो पोएट को एक अनयूजुअल थिंग से वो एक्सपीरियंस करे थे कि जो ऑलवेज स्कूल जब स्टार्ट होता था तो स्ट्रीट में एक ग्रेट लाउड नॉइज़ होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स का रिपीटेडली कहना था, वेरी लाउड, आवर हैंड्स, आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड टीचर्स ग्रेट रूलर मूविंग रैपिंग ऑन द टेबल. रैपिंग का मतलब क्या है? टेबल में बार बार
मारना, वो हम देखते हैं ना टीचर जो रूलर, रूलर का मतलब है स्केल, स्केल से बार बार वो टेबल में मारते थे. I had counted on commotion to get to my desk without being seen, but of course the day everything had too quiet as Sunday morning. ये सब unusual things वो देख रहे थे कि ये जो स्कूल है, ये स्कूल के तो टाइम में कभी भी नहीं होता था, और एक ये संडे के, संडे में जब कोई बच्चा नहीं आता था, संडे तो एक छुट्टी का दिन है, तो जब बच्चे नहीं आते थे तो ये शांति था. जब बच्चा देते थे ऑलवेज नॉइज. सो it is been quiet as the Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamill waking up and down with his terrible iron ruler under its arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो वो जब वो कैसे आते थे, जो ऑलवेज लेट से ही आते थे स्कूल, हो तो कैसे आते थे, जब नॉइज़ होता था तो पीछे से चले जाते. तो आज कैसे होगा, आज तो नॉइज़ नहीं है, सब क्वाइट है. तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड. ब्लश्ड का मतलब क्या है, माई चीक्स आर रेड एंड हाउ फ्राइटन. आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ माई टीचर who will scold for being late. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. फ्रांस कौन है, पोएट जो या आई कह रहे थे, तो वही है, उसका नाम ही है फ्रांस. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on this beautiful green coat. टीचर का अब डिस्क्राइब कर रहे थे जो एम हैमिल क्या पहन के आए थे. ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. ये आप अंडरलाइन करें. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर मोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. यहाँ पर इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, इंस्पेक्शन का मतलब है जो भी चेकआउट करने के लिए आते थे, तो उस दिन का इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज के अलावा ये ड्रेस कभी भी एम हैमिल ने नहीं पहन के आए थे. तो आज तो कोई कुछ भी नहीं है, तो एम हैमिल फिर भी क्यों पहन के आए थे. बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम. सोलम मीन्स क्वाइट. बट थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. तो और भी थिंग क्या क्या दिखे, अनयूजुअल थिंग, स्ट्रेंज थिंग वो क्या दिखे जो सरप्राइज हो गए. तो जो बैक बेंचेस थे उसमें वो तो ऑलवेज एम्प्टी था. तो आज विलेज के पीपल वहाँ पर बैठे हुए हैं. कौन कौन, ओल्ड हॉसर, थ्री कॉर्न हैट, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर. एवरीबॉडी लुक्स सैड. The poet cannot understand why the school is very quiet, solemn, calm, because in actual day there is no quietness in the school. So today why, because today is the last lesson that M. Hamill will taught them. And this is order given by the authority to taught only the German, not the France students. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in same grave and gentle, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in school of Alsace and Lorraine. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means ये जो word M. Hamill ने दोहरा है, तो ये एक कोल्डनेस और एक फियर का पोइट को लगा. ओ द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. सो पोइट तो कभी भी क्लास नहीं करे थे जो एम हैमिल पढ़ाते थे, तो वो कुछ भी नहीं जानते फ्रेंच की. बट इन लोगों का मदर लैंग्वेज ही फ्रेंच, बट वो बोल सकते बट नेवर लर्न इट. How sorry I was for not learning my lesson, because he is not very attentive to the M. Hamill's lessons which he taught. He is always spent his time by seeing the nature, by seeing the bird, by seeing the river, by seeing the village, and always having the pleasure to see the nature, and the nature gives him happiness very much to him.
My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history, and M. Hamel too, the idea that was going away and I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man, it was in honor of last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of village was sitting there in back of the room, because the old man does not come in the actual time or actual time of the school. They do not come, they are like the all the poet, they do not come and all do not very much attentive, does not give their attentive attention to the M. Hamel's lesson. So today is the last day of the M. Hamel's lesson, so they were come, they were present in the class. It was because they were sorry they had not gone to school more. It was their way of thanking our master. तो वो आए थे क्योंकि वो थैंक करने के लिए फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for country that was theirs no more. While I was thinking of all this, I heard my name called up. पोएट को बुलाया गया, M. Hamel ने बुलाया. It was my turn to recite. What would I not have given to able to say that dreadful rule for participle although very loud, clear and without one mistake. तो उनको कहा गया कि participle without any mistake कहने के लिए. But I got mixed up on first words and stood there holding on my decks, my heart beating. जो लोग पढ़ाई नहीं करते, जो लोग पढ़ा में स्टडी में अटेंशन नहीं देते, तो जब भी टीचर को क्वेश्चन आस्क करते थे तो वो डर जाते थे. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz, you must feel bad enough. See how it is every day we have said to ourselves, but I have plenty of time, I will learn it tomorrow. But all the students of M. Hamel's always said that we will learn it tomorrow, we will learn it tomorrow. But tomorrow never comes. If we not do our study in time or in 24 hours, we will lose our time. We will do not cannot get good marks in our studies. So we have to do our studies in enough time that we would get. So tomorrow never come. Now those fellows out there will have right to say, how is it you pretend to be Frenchman and you can neither speak nor write your own language, but you are not worst, poor little France. तो जब भी another students will come, if another students will come, then they have right to say you that you are a Frenchman, but you can't speak in French, can't write as French words. It's your mother language, but you can't but you do not know. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or the mills so as to give a little more money. And I have been blamed also. Have I not often to send to water my flowers instead of learning your lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then from one thing to another, M. Hamel went on talk of French language, saying that it was most beautiful language in the world. तो M. Hamel कह रहा है कि मैं तो should I not send you to put my flowers? Why do you do not learn the French? Why? He is asking. The clearest, the most logical. I had never listened so carefully and he had never explained. It seemed almost as if poor man wanted to give us all. After grammar we had lesson, he bought new copies, France, Alsace, France, they looked for like little flags. You ought to have seen how was scratching of pens over paper. Once some beetles flew, but nobody paid no attention. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless and gazing first at one thing. So he want to recollect all the memories in his mind. When he will go outside the school, he will recall all the memories that he has spent with his students. So that's why he is gazing first at one thing, then at another. He want to collect all the memories, all the things. Just like that, only desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in gardener were tall. तो जो garden में क्या थे, walnut trees, hop vine, ये आपको underline करना पड़ेगा.
All at once, church clock struck 12. Then the angelus. At same moment, trumpets of Prussian returning from drill. तो उनको क्या बोले, उनको एक दे रहे तो आपको रिटर्न करना चाहिए. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never see him look so tall. My friend said he, aye, but something choked him. Then he turned to backboard, took a piece of chalk and bearing he wrote as large as the could, Vive la France. ये एक फ्रांस का वर्ड है जो क्या है, बाई नोट है. Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture towards with his hand. Gesture मतलब क्या, पोजीशन. School is dismissed, you may go. तो ये था आपका स्टोरी, या हमने आज डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन दे दिया. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी. तो आप जानते ही हैं सिलेबस क्या है सीबीएसई का क्लास 12 का 2024 to 2025. इस बार आपको कोई भी ग्रामर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर का मतलब मैं बोल रही हूँ टेंस प्रीपोजिशन नहीं है इस बार है आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू जॉब एप्लीकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, लेटर टू एडिटर, ये सब है. आपको मैं धीरे धीरे करवाऊंगी. ठीक है. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो.